हाय गाइस, माय चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप इन्वॉल्व द पोटेशियम परमैंगनेट फॉर वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे वाटर को अगर तुमको साफ करना है तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो क्या क्या स्टेप रहेगा उसका डिस्कस। ऑर्डर यूज द पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर ट्रीटमेंट। दीज आर द सैंपल ऑफ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक या वेल। Check the pH, treat temperature, iron level and manganese level. The pH of water should be monitoring on the regular basis. दूसरा क्या कह रहा है, level of iron and manganese help in the calculating amount of potassium permanganate to use. If the level of the manganese are high, it can be visual exam as water will be have pink tint. तीसरा कह रहा है, in case of iron the concentration 0.9-4 mg of potassium permanganate per mg is used for oxidizing. तीसरा क्या कर रहा है, in case of iron concentration 0.94 mg potassium permanganate per mg is used for oxidizing. क्या कर रहा है, in case of the manganese concentrations of 1.9 mg potassium permanganate per mg is used for oxidizing. तो हम क्या कर रहा है, pre-med tablet can also use if person does not want to calculate dosage. For example, one product advised using one tablet for 50 गैलन ऑफ वाटर। यहाँ पर वन टैबलेट तुम यूज करोगे फॉर 50 ग्राम वाटर, इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ। But dropping back of one tablet per 100 gallon if individual just improve water clarity such as in pond. Manufacturing advised 2 tablet per 50 gallon water treat the bacteria and parasite problem. Rate of oxidation depend on pH water. Iron oxidation occur within the 10 minutes. Add pH 7.2 या above. If the pH 6.9, it can 1 hour. And manganese oxidizing required less than 1 hour. Add pH 9.4. In case of treatment test of water does not potassium permanganate, रेंज 0.2 से 20 mg per liter is used. That is important in everyday life. Next step of filter water, remove solid residual of manganese dioxide and precipitate element sulfur and resulting from the treatment with potassium permanganate. Potassium